once again I welcome you all to Career in Pharma। तो आज हम बात करेंगे साइंटिफिक मेडिकल राइटिंग की। एज वी ऑल नो मेडिकल राइटिंग इज अ वेरी वास्ट टॉपिक और उसमें से टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जस्ट साइंटिफिक मेडिकल राइटिंग। कैसे इसमें शुरू कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और इस सब चीज के लिए वी हैव अ एक्सपर्ट विद अस। We have Dr. Arpita Kabiraj with us, and let's start this without further ado. I just welcome Dr. Arpita here. Good morning, Dr. Arpita. Good morning, Dr. Neema. How are you? Yes, all good, all good. So yeah, with this, I will not tell anything about Dr. Arpita. I want Dr. Arpita to start with this. So Dr. Arpita, can you briefly introduce yourself and little bit if you can share your journey? कैसे आपने शुरू किया? Sure. Hello, everybody. I am Dr. Arpita Kabiraj. I am a dentist by profession and I have done my master's in oral pathology and microbiology. Now, how the journey of SMW or scientific medical writer started is very tricky for my case because I never thought that I'll go into this. It was always a passion that, yes, I have done my MDS, so I'll go into college, academics, teach students, be a PG guide, and so on and so forth. But obviously, at the back of the head, writing was my habit. It was my passion because during my post graduation, I had already done a lot of writing work, my thesis work, Hmm. and I had helped my colleagues and all. So that took us a tremendous leap after I shifted from my base, after I left my first job as an assistant professor. And then I came back, I shifted to my place Indore, and then I was like, okay, fine, I have to do something because owing to my family responsibilities I couldn't join college at that time. So Hmm. that is how it all started. I said, okay, fine, let me do something in this aspect also. So I did a lot of studies and how to do, how to grow, how to learn, how to put forward the new aspects. And that's how it started, just with a small uh, what to say, writing of a small abstract for somebody. Hmm. I just took a leap bound and then I gathered pace, slowly like a tortoise, and now I've reached where I am right now. So, guys, just now, like Dr. Arpita said, that she started with writing one abstract. So, yes, that's how it starts. Whenever anyone is starting something, वो शुरुआत तो छोटी से ही होती है, but you never know when that can be big. So, if you have interest in writing, please start writing. कुछ भी छोटा blog हो, छोटा article हो, whatever it is. So yeah, very interesting point, Dr. Arpita. Now, second question is, uh, as medical writing is very vast. आज के टाइम पे मेडिको मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, मेडिकल कंटेंट है, हेल्थ ब्लॉग, लाइक एन नंबर Writing. ऑफ थिंग्स आर देयर। यस, Yeah. तो साइंटिफिक मेडिकल राइटिंग कैसे दूसरी मेडिकल राइटिंग से डिफरेंट है? See, when we talk about scientific medical writing, it concerns with only the publications, the research work, and that part of communication wherein we are putting various arenas of research work, case studies, case reports, and thesis projects, and all this writing aspects, the theoretical part of it, into the forefront so that it can be helpful for faculties, helpful for the academicians, helpful for the students, also side by side helpful for the clinical practitioners day in and day out in their practice, and for some policymakers also. Because see, for example, if we are taking some equipment or some process or some specific technique, okay, we need to know the background of it. We need to know how it is working, what is the process, or some disease we need to know about the pathogenesis, about its molecular aspect, and so on and so forth, so that we can further improvise or implement it in our work. So for that, we need some research work, some basis, some groundwork to be done. Herein, our work comes in because there are umpty number of journals, there are umpty number of publishing houses, there are umpty number of publishers, and so many journals uh, in relevant fields of medicine, dentistry, Hmm. nursing, physiotherapy, pharmacy.
Okay, all these journals. Now everybody is publishing every day. So many people are there. So these has to come to the forefront also, na? And to write all these things, people need efficiency, people need time, people need that much of analytic skills, people need that much of patience. So therein the SMW or scientific medical writers come into play. Hmm. So that is how the network, the area, the field, everything is growing. Yes. So मुझे समझ में आया कि साइंटिफिक मेडिकल राइटिंग जो है इट्स मोर इनटू रिसर्च एंड थीसिस वाली Yeah, चीजें, राइट? yeah. तो यस, सी रिसर्च तो ऐसी चीज है जो कभी एंड नहीं करेगी। लाइक क्लिनिकल ट्रायल्स हो गया, नई मेडिसिन आ रही है, इवन बायोटेक्नोलॉजी में इतनी रिसर्च चल रही है, जीन्स रिलेटेड मेडिसिन भी आजकल वो वाली मेडिसिन पे चल रही है, तो रिसर्च हर फील्ड में Everything, होती है। everything. यस। Bioinformatics, biotechnology, यस। stem cell therapy, all these things, हम्म। everything is growing, growing, growing. So these यस। research projects has to be drafted, has to be documented. करेक्ट। Because कोई भी research हम करेंगे उसका documentation नहीं होगा, that does not हम्म। has any impact. Okay, यस। people have to know ना कि हाँ ये काम हुआ है, हाँ, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, बस वो उसका कोई अगर हुआ वैल्यू ही है और नहीं है। कहीं अगर मैंने डॉक्यूमेंटेड नहीं कर है। दिया और मेरे पास ही है वो संजो के मैंने अपनी तिजोरी में रख दिया तो क्या फायदा है? हाँ। उसको लोगों तक पहुंचाना है ना, दे हैव टू नो, दे हैव टू लर्न, दैट ओनली करेक्ट। हाउ वी ग्रो एवरी डे। यस, एंड दैट हाउ साइंस ग्रोज, हमारी साइंस मेडिकल फील्ड ग्रोज इतनी ग्रो कर रही है। obviously, यस। सो like every, we यस। know that knowledge always हम्म। grows when you share. हम्म। We करेक्ट। cannot confine knowledge, so the more you write, the more you learn. That is my motto. Whenever I do something, I have to हम्म। learn that full project, then only I can reproduce. करेक्ट। करेक्ट। सो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डॉक्टर अर्पिता, जैसे आपने बोला रिसर्च थीसिस, तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बेसिक कि कोई भी स्टूडेंट स्टार्ट कर सके साइंटिफिक मेडिकल राइटिंग के लिए? Right. So as such, अगर आप लाइफ साइंस ग्रेजुएट हो, good enough. In that case, if we are related to medical field, either we have done our BDS, MDS, MBBS, MD, or from pharmacy people, okay, people from BSc nursing, MSc nursing, okay, physiotherapy people, okay, BPT, BOT, all these aspects. Then there are the paramedical courses that have come up nowadays. Okay, Ayurveda and BMS, all these courses, everything, because we all in these courses we come across all the medical aspects through our graduation and post graduation tenure. Okay, we know about the human anatomy, we know about the physiology, we know about biochemistry aspects, we know about the diseases, we know about certain things, we know. So that is big boon actually. Being from a medical background, that is a big boon, added boon, I would say. Okay, apart from that, if anybody is from life science graduate also, and he or she has the capability to analyze, to upscale her knowledge, okay, and if he or she has the passion and that perseverance of, yes, gaining more of knowledge in that respect, whatever work he or she is getting, okay, and he has the knowledge to comprehend things easily also and reproduce it, then the path is open. It's a good option for everybody. But in this field, three P's which you have to have: passion, perseverance, and the big one, patience. Then only you can go ahead in this field. Because see, it not only in this field, it's every aspect, every field, every profession in this whole world. If you don't have passion, if you don't have that consistency, that perseverance of gaining that thing, that goal, achieving, and if you don't have patience, nobody will achieve that destination at the end of this. It's relevant to every field. यस, तो ये तीन चीजें, पैशन, परसिवरेंस एंड योर कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट, एंड यस पेशेंस, क्योंकि अप्स डाउन लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक सीधा ईसीजी भी ऊपर नीचे जाता रहता है। सो या दैट इज अ नॉर्मल ग्राफ फॉर एवरीथिंग व्हाट यू डू इन लाइफ, ऊपर नीचे रहता है, बट या यू नीड टू बी पेशेंट। सो या थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल एडवाइस।
इसके साथ दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछूंगी कि ठीक है, ये तो क्वालिफिकेशन वाइज हो गया कि हाँ अगर आप लाइफ साइंस है या हेल्थ केयर बैकग्राउंड है, यू कैन डू इवन एमबीबीएस गाइस, दे कैन आल्सो डू दिस साइंटिफिक मेडिकल राइटिंग। बट किन केस में सर्टिफिकेशंस की जरूरत है या कोई एडिशनल प्रोग्राम्स या सर्टिफिकेशन की जरूरत है डिग्री के अलावा, अगर किसी को साइंटिफिक मेडिकल राइटिंग में स्टार्ट करना है तो? Sure. See, when I started 8 years back, I didn't have knowledge about all this courses and all that thing. Okay. हम लोग में it was like, see, I told you that I had that passion of writing. हम्म। Okay, writing as a such, as in such, I used to write my own diaries. Okay, हम्म। from childhood. That is my habit. My daily work diary. I always used to maintain journals. So that transformed into writing articles when I was doing my PG. हम्म। आफ्टर दैट ऐसा कुछ होता है, इसमें कोर्सेज आते हैं, ये मुझे आइडिया नहीं था. सो आई हैड नेवर डन एनी कोर्सेज ऑन दिस. ओके. ओके। But then while I was doing it, after initially, obviously, first 1 or 2 years was really struggle for me. It was really slogging over. Okay. Then while Googling and all, I came across there is two association, big associations. One is AMWA, American Medical Writers Association, and European Medical Writers Association. However, they are quite priced enough, and they have their own certificate courses out there. Okay. It is not mandatory that you have to do. Okay, I didn't do it. I just went out to the this thing website, and I just researched on their website what it is and what is the overlook and what examples they had given and all that. I just read them. So I didn't do it. So it is not mandatory for anybody to do it. However, it is your personal discretion that whether you want to learn it thoroughly, fully from the go, or whether you want to just upskill it by reading a few things. Now, there are many courses that have come across from good organizations. But if one of my suggestions would be, don't go and just click on everything right away. Do a proper research and see which one is useful to you, which will be helpful. Because uh, if you would ask me, I had done a course from our academy last year that was for certain aspect because somebody had asked me for a certificate of medical writing. Otherwise, I had no idea of doing it. But that course did not help me so much in growth, in what to say, theory point of view. I knew more than what she told me, what that course told me. So whenever you're going in for a course, do a proper research, talk to the team, talk to the organizers, and then go in for the course. Clear all your doubts. See that it is beneficial for you. See that you're getting a good content. यस। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट कि कोर्स करना है कि नहीं, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव एक्चुअली। आप खुद को देख लो कि आप कौन से स्टेज पे हो भाई। बिकॉज डॉक्टर अर्पिता इज ऑलरेडी एमडीएस, सो एमडीएस या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे हम थीसिस का काम करते हैं, तो एक वो आइडिया हो जाता है। बट फॉर जस्ट ग्रेजुएट आप कर सकते हैं। आप या तो किसी पेड प्रोग्राम में जा सकते हैं या यू कैन एक्सप्लोर फ्री कोर्सेज ऑल्सो। बट या व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन तो चाहिए। यू जस्ट कांट गो लाइक अ हेडलेस चिकन कि जस्ट चलो जॉब ढूंढते हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए। I can add one more thing here, like a simple, for example, if I would have been a only BDS graduate, हम्म। okay. After that, taking up a scientific medical writers would be a little bit tough for me because reading journals, articulating them, and understanding those research work, which is not of a graduate level, it is totally understandable if I do PG or PhD, or if I have done a lot of research work in respective fields, if I've surveyed so much, then only it gets easy. Secondly, one more thing, that is there are many free programs also available on YouTube and Udemy and all that. So my advice would be not to go in for these free courses, because as a SMW I have done all this research work. Okay. In my free time, it just comes across, and obviously we watch these channels and we watch these videos and etc. So it does not give you that total insight information, how the protocol should be, what guidelines should we follow, how the structure should be, what content should be, what formatting needs to be done.
what is this, what is that. There are specific, everything has details. So those details will come only if you go in for a good workshop. And Right. that workshop, definitely nothing comes free in this world. Any workshop will, I mean, if you are good and okay enough, if you are satisfied enough, I would suggest take up a course and learn everything in details. Learning never stops. I mean, मेरी मम्मी एक चीज बोलती हैं हमेशा, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन विल नेवर फेल यू. तुमसे सब कुछ सब छीन सकते हैं, एजुकेशन एंड योर नॉलेज नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम यू. So if Correct. you have that in mind, and if you have that insight, you'll definitely grow in life. Yes. So जितना हो yeah, सके ले लो. करेक्ट. सो इट्स ऑल सब्जेक्टिव, डिपेंड्स Yeah. ऑन यू. बट हाँ, एक मतलब मैंने एक चीज बड़ी नोटिस की है कि अगर कोई चीज फ्री होती है ना, यू डोंट वैल्यू दैट. तो जब आपके जेब से पैसे निकलते हैं, मतलब ये मैंने पर्सनली, मुझे लगता है मेरे ही केस में, जैसे कोई चीज फ्री मिली है तो मैं उसको उतना वैल्यू नहीं करती हूँ. जब पैसे जाते हैं तो मुझे लगता है पैसे गए हैं तो अब तो उसको सीरियसली करना है. तो ये भी फैक्टर आ जाता है. अगेन इट्स सब्जेक्टिव एंड हाउ मोटिवेटेड यू आर. तो इसी से दूसरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर अर्पिता कि एज अ मेडिकल राइटर जिसको भी स्टार्ट करना है, तो वो बेसिक की स्किल्स क्या होनी चाहिए किसी भी मेडिकल राइटर की, लाइक यू नो अराउंड रिसर्च राइटिंग एंड कम्युनिकेशन, लाइक व्हाट शुड बी द बेसिक की स्किल? Okay, so basic key skills. पहले तो obviously I told just now we spoke about the background, medication background. ठीक है, medicos हो, life science graduates हो, अगर आपने courses की हैं, good enough. All these things will help you out. Apart from that, the basic key skills will be to be able to find out details for any topic given to you. Okay. Number two, to have that capability to analyze things, either positive or negative. Okay, to be able to give positive feedbacks as well as negative feedbacks for other people's work as well as for your own work. Okay, to be able to understand and comprehend what the client is asking you to do, to reproduce, what the exact topic is, how to represent the data, complex data in a more simplified manner. Okay, and of course be attention to details, be concise, be specific. Okay, and since it is totally science, we have to be very scientific. We cannot go beat about the bush or बहुत सारे कहावतें और मुहावरों लगा के, and we cannot make it beautiful flowery language. No, it won't be accepted in a journal. You have to be specific, be precise, but be very impactful. So, and obviously some basic knowledge about your Microsoft Word docs, Google, and your Excel sheet, and little bit about your statistics, how to comprehend the statistical work and all that. So these Correct. are very much essential. Yeah, so these are the basic thing which Dr. Arpita spoke just now. और हाँ, जो basic Microsoft Word, Excel, you know, PowerPoint, all these are the basic things nowadays. जो कि मुझे लगता है हर जगह जरूरी हो रहा है, इवन इन मेडिकल फील्ड. अगर आप क्लिनिकल बैकग्राउंड से भी है तो बेसिक लैपटॉप में एंट्री एंड यू नो वो डेटाबेस, वो सब इवन एक Everything is डॉक्टर्स को required. भी आजकल करना पड़ रहा है. तो या दीज बेसिक यू शुड नो, स्पेशली आईटी स्किल्स अगर आप कर लेते हैं, उसको मास्टर कर लेते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अदर देन व्हाट यू नो डॉक्टर अर्पिता स्पोक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर अर्पिता इज कि ये साइंटिफिक मेडिकल राइटिंग राइटिंग में करियर कैसा होता है? मतलब एक, अगर मैं ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की बात करूं तो कैसे स्टार्ट होता है, फिर जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं तो क्या क्या डेजिग्नेशन होते हैं, और मे बी यू नो किस टाइप की ग्रोथ होती है इसमें? राइट, सी साइंटिफिक मेडिकल राइटिंग एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा ग्राफ एकदम फ्लैट था. देयर वाज नथिंग बिकॉज आई टोल्ड यू आई स्टार्टेड राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट ओनली फॉर अ फ्रेंड ऑफ माइन दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट. देन आई गॉट one more author who, and my first earning was only 1000 rupees, 1000 or 1500 rupees for one article. That was my initial income. Okay, so that way it was like only what to say, networking from my aspect. Now the growth depends on how much you are networking. If you are a freelancer, okay, so I'll talk about various aspects. Let us talk about freelancing first. So as a freelancer, it all depends upon your
networking. It all depends upon the trust you build on authors. Okay, because one author can bring about 10 more authors to you. That link goes. And the more you build that trust with these 10 authors, that 10 authors each individually will bring 10 more authors to you. There itself, you are getting 100 authors. Hmm. Okay, so 100 clients at one go is a big thing. And you never know, one author can give you 5 articles at one time or 5 projects at one time to finish off. So networking in freelancing is a big thing. And to have that trust, and you have to be flexible enough for freelancing work. Okay. Apart from that, coming to the companies, if you talk about, or the work projects, or the work aspects, or the job prospect, there nowadays there are many CROs, okay, clinical research organizations. There are medical companies. Okay. There are big publishing houses, journals. Okay. Like there is Curious Journal, medical journal. There is Dental Tribune International. There is there are many local Indian journals also. In fact, JP Brother journals also, they hire sometimes as medical writers. There are many journal houses and publishing houses. They ask for medical reviewers. They ask for editors. They ask for proofreaders. Okay, they ask for scientific writers. So these people hire you or as scientific medical writers. So therein the growth comes in. The more you connect, the more you can work. So it's a slow start will be there, but once you reach that zenith, you will get that what to say kick, and it'll definitely take a path. But you have to give time. That is definite. Yes. तो नथिंग इज लाइक अभी जाएंगे और अभी मेरे को कोई 6 फिगर सैलरी का आके वेलकम करेगा. इट नेवर हैपेंस एज सच. I told you for past 8 years I have been, I mean, working on this field. हाँ. First 2 3 years was really struggling. Then the big blast came to all our lives. COVID came and everything stopped. So we all were stuck at home. And thankfully, COVID was a boon for me because at that time I got more work. And since 2020, that COVID, it just strike. I mean, it just took a big leap. And more and more, I don't know why people were sitting idle at home or something, and they thought of, okay, let us write articles. So that time the big leap came into me. And at that point of time, I joined a publishing house also. I joined a journal also as a reviewer. That Okay. and everything happened during that time. I joined Hmm. a journal also as a reviewer. I used to work at in a as a freelancer for somebody, for some what to say, senior of mine or sir of mine. He used to pay me something, but then I left that because it was not. I was not free working. I mean, freely working at that. Hmm. So like this, it will come. You have to be patient. You have to Correct. search every arena wherever you can find out. Yes. So yeah, one thing definitely networking is very Very important. मतलब important. अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, चाहे आपको किसी मेडिकल राइटिंग एजेंसी में जॉब चाहिए, चाहे किसी जर्नल में रिव्यूअर की जॉब चाहिए, एवरीवेयर यू नीड नेटवर्किंग. आज की डेट में तो नेटवर्किंग से ही जॉब मिल रही है या कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है. दैट इज वेरी कॉमन. सो अभी नेटवर्किंग नहीं है तो यू गोइंग टू मिस सो मेनी थिंग्स. So yeah, networking is very important. Now the next question, Dr. Arpita is कि अभी जो करंट सिनेरियो पूरा साइंटिफिक मेडिकल राइटिंग का चल रहा है, मेडिकल राइटिंग नहीं, जस्ट फॉर साइंटिफिक मेडिकल राइटिंग, आई वांट टू आस्क कि आर देयर इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रेशर और इज इट अ वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड, हाउ इज इट? इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए कैसी है. The competition definitely is there. It has हम्म. taken a big leap nowadays. हम्म. कुछ सालों पहले तक it was medical writers they were asking. Now it has been subdivided. Now medical writers, we have regulatory writers, we have content हम्म. writers, we have blog creators. Okay, हम्म. then we have medical marketing people, and we have scientific medical writers. So these different areas have been broken. Now, as a fresher, I would suggest if you can get opportunities to join as an intern. Okay, in some companies, maybe unpaid internship also will be good enough because you need to build your portfolio first. Okay, see, as a postgraduate, if I'm talking about,
If somebody has done her MD or MDS or MSc nursing or something, they would have done their thesis, or PhD for that matter. They would have done their thesis, would have done some research in their work. So those research work you can draft them as articles, as papers, and publish them. That will add it to your portfolio. Okay. So ये जब करेंगे ना, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी पब्लिशिंग हाउस में, किसी भी मेडिकल एजेंसीज में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, you can show them according to your as your resume, and apply for internships, apply for trainees, okay, apply for associates, okay. So these will be an added boon for you, and there you can grow. After that, learn how to work, how to develop, how to build. So these will definitely help you out. तो यार मतलब कंपटीशन तो है बट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं ठीक है, आजकल, बहुत है, इफ आई बहुत है। कंपेयर, यस, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन है, हाँ, लाइक एवरीथिंग इज ऑनलाइन, बिना everything. ऑनलाइन के आजकल कुछ भी नहीं है। So तो you go to करेक्ट। freelancer.com, you go to Upwork, you go to LinkedIn. All these are open platforms nowadays. I mean, like इंटरशाला ऑल्सो। in it's इंटर also there. Glassdoor.com also. So many areas are there. हमारे टाइम पे कुछ नहीं था। मतलब करेक्ट। जॉब ढूंढना होता तो हम लोग को कॉल करना होता था, मैम सर कुछ है क्या कहाँ कहीं पे। तो अभी तो करेक्ट। इट्स सो वेरी ओपन टू एवरीबॉडी। करेक्ट। करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर अर्पिता की, व्हाट डू यू थिंक कि क्योंकि आपने भी कुछ साल पहले एज अ फ्रेशर जब स्टार्ट किया, तो कोई भी फ्रेशर जब इसमें मेडिकल राइटिंग में स्टार्ट करता है तो क्या कॉमन चैलेंजेस हो सकते हैं एंड हाउ दे कैन ओवरकम दोस चैलेंजेस? चैलेंजेस, पहले तो इफ आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, ओके, at home, that is a big challenge because people think अरे work from home है, बहुत आराम का काम है. It is not that. It's a big challenge because when you are working from home, you have to manage your home as well as your work side by side. ये एक नंबर वन चैलेंज है. एज अ फ्रेशर, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि आई विल गेट वर्कड अप, आई विल गेट बोर्ड, आई विल गेट डीमोटिवेटेड. ये नहीं हो रहा है मेरे से, मुझे समझ नहीं आ रहा है. डोंट होल्ड दैट इन योर हेड. टेक अ ब्रेक, रिलैक्स. नहीं समझ में आ रहा है, कोई सिंपल दूसरा टॉपिक ले लो उसी सेम सब्जेक्ट पे, उसको पहले रीड कर लो आराम से. रीड दैट, अंडरस्टैंड दैट, कॉम्प्रीहेंड योरसेल्फ कि मैं इसको कैसे अपने हिसाब से ले सकती हूँ, एंड देन यू कैन पुट इट अप. पहले राइटिंग में मे बी द इंग्लिश विल नॉट बी देयर, द ग्रामर विल बी इनकरेक्ट, यू वोंट हैव गुड फ्लो. कोई बात नहीं, टेक योर टाइम. एक बार नहीं होता, दो बार नहीं होता है, थर्ड टाइम इट विल डेफिनेटली कम योर वे. आपको खुद से समझ में आ जाएगा, नहीं ये अच्छा लिखा है मैंने. तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं आई विल जस्ट होल्ड बैक, आई विल जस्ट से नो, ये मेरे से नहीं होगा, मुझे कुछ और करना है. बट if you are really into it and if you have sorted out all other aspects and you don't have anything, this is a good option for you. Don't let it go. Keep holding tight. It will come your way definitely. करेक्ट। तो ये जो चैलेंजेस है कि शुरू में आपको लगेगा यार बोरिंग हो रहा है या बहुत लिखना पड़ रहा है, ऑल दोस बहुत चैलेंजेस टायरिंग है. बहुत टायरिंग है। तो लेट मी टेल यू, चैलेंजेस इनिशियली तो हर फील्ड में आते हैं, नॉट जस्ट इनिशियली। जब आप एक स्टेप से दूसरा स्टेप लेते हैं, at a fresher level also, or at an experience level also, challenges are everywhere. Challenges Just comes every day, every correct. minute, every minute. Yes. So you cannot hide that. You cannot ignore Yes. that. You have to And you overcome that. should be happy that you are facing those challenges, because without challenges there is no growth also. There is no growth also. Correct. So yeah, challenges is all part and parcel of all the industry, not just medical writing. So next question डॉक्टर अर्पिता ये है कि आजकल चैट जीपीटी आ गया है, मैंने चैट जीपीटी तो ऐसा हो गया है कि मेरे को बस उसको बोलना पड़ता है, सी लिसन चैट जीपीटी, मेरा ये है ये है ये है, मुझे इस पे ये लिख के दे दो। तो कंसिडरिंग दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ पे एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, what do you think, how it's going to impact medical writing field and job inside medical writing field? See, all these AI models, whether it's ChatGPT or Google Gemini or whatever,
They are, however, it is all human based or computed technologies, right? But they हम्म, will definitely help you out. वो आपको सहारा देंगे. They will not be able to analyze it. They don't have this analytic skills. They don't have this real time value skills. जो emotion, जो thought process, what the analytic terms and terminologies, and that key aspects of any what to say complex data that you can bring about, that a human can bring about. Maybe the AI cannot unless and until you put in the thoughts. हम्म, Okay, for example, if I am analyzing some data, some complex systematic review of एक data मैंने analyze करना है, ठीक है. Unless I have done it, I know, I understand the data, I understand the graph. मैं चैट जीपीटी को बोलूंगी, चैट जीपीटी यू इस आर्टिकल को मेरे को कॉम्प्रिहेंड करके दे दो. I don't know whether the chat GPT, whether the app is so much powerful enough to comprehend the whole thing and also correlate the same data with previous findings and find out all the articles. कौन सा इसमें से सेम है, कौन सा डिफरेंट है. I don't know how much efficient will it be. Maybe it will be able to analyze, maybe it will not, but it is a big question mark हम्म, because it is all computed, it is not human brain. हमारा हम्म, दिमाग जो करेगा हम लोग समझ सकते हैं ना कि अच्छा इस दोनों इन दोनों में ये डिफरेंस है, इन दोनों में ये डिफरेंस नहीं है. मैं ढूंढ सकती हूँ चीजें. हम्म, unless and until I put the prompt, वो तो मेरे को कोई काम नहीं करके देगा ना. मैं क्या बोलूंगी, चैट जीपीटी मेरे को एक आर्टिकल लिख के दे दो ऑन एआई इन डेंटिस्ट्री. तो मतलब वो तो नॉर्मली लिख के देगा. ये उसमें कोई रेफरेंसेस नहीं होगा, उसमें कोई बैकड्रॉप नहीं होगा, कोई पुराना थॉट प्रोसेस नहीं होगा. तो कैसे होगा ये? मेरे हिसाब हम्म, से I don't know how much effect it is because, and secondly one more thing, nowadays there are many apps which can detect the AI content. ओके. The journals, the publishing houses ऐसे पकड़ लेंगे, अरे ये तो एआई कंटेंट से लिखा हुआ है, तो क्या फायदा है हमारा. हाँ, अगर वो हमको पेमेंट कर रहे हैं तो हम अपना एफर्ट डालते हैं ना. करेक्ट करेक्ट. नहीं, 100% ट्रू. और टेक्नोलॉजी वाली जो लैंग्वेज चैट जीपीटी की होती है वो बहुत ही एक मशीनरी लैंग्वेज भी मोनोटोनस, आती है. यस, करेक्ट. मोनोटोनस है एंड इट इज सेम. आप हाँ, एक दिन में 4 चीज लिखने को बोलो ना, उसका लैंग्वेज सेम पैटर्न का ही होगा, देखना. हाउएवर द कंटेंट विल बी डिफरेंट बेस्ड ऑन द टॉपिक, करेक्ट. बस उसका फॉर्मेट सेम ही होगा ऑलमोस्ट. हम्म, हाँ, ऑन द अदर हैंड आई वुड आल्सो से दैट इट विल हेल्प डेफिनेटली. ये मैं बोल सकती हूँ, हेल्प तो करेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग अ पैराग्राफ ऑफ समथिंग, because हम्म, there are many articles where we cannot understand some portion of it. हम्म, Some discussion, maybe the language is not getting into it or we cannot correlate it. वो आप उसको कॉपी करके बोलो कि भाई साहब मेरे को ये इजी लैंग्वेज में समझा दो, इसके मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं, तो मेरे को समझ में आए. ऐसे वी कैन टेक हेल्प, बट इट्स नॉट दैट आप पूरा लिख दो मैं उसको कॉपी पेस्ट कर दूं. दैट हाँ, इज तो नॉट एथिकल आल्सो ना. यस, करेक्ट करेक्ट. तो स्पेशली मेडिकल राइटिंग में इफ समबडी हायरिंग यू, वो आपको इसलिए नहीं हायर कर रहे कि आप उसको एआई या चैट जीपीटी से करके दे दो, उसमें तो फिर आपकी जॉब गई. गई. बिकॉज लाइक डॉक्टर अर्पिता सेड कि एआई टूल्स आइडेंटिफाई है. हो जाता है कि कैसे लिखा है हाँ और वो हाँ, पढ़ के भी समझ में आ जाता है. समझ में आ जाता है. तो और या, वो खुद कर लेगा ना, वो मेरे को पैसे क्यों हाँ, देगा. करेक्ट करेक्ट. आप मे बी आप हेल्प ले सकते हैं, मे बी ग्रामर चेक करने के लिए, और मे बी यू कैन हेल्प जस्ट टू गेट एन आइडिया. बट थॉट आपका अपना खुद का होना चाहिए. दैट्स टेक व्हाई चैट ऑल्सो, ग्रामर इन चैट जीपीटी इज ऑल्सो नॉट गुड. नॉट गुड. नो, क्योंकि आप ये चेक कर सकते हो, आप कोई भी हाँ, कंटेंट चैट जीपीटी को बोलो एक ऐसे हाँ, लिखने हाँ, के लिए, जनरल ऐसे लिखने के लिए, नॉट रिलेटेड टू साइंस, और उसको आप ग्रामरली में डाल के देखो, इतने हाँ, सारे ग्रामर मिस्टेक्स आएंगे उसमें. तो ग्रामर ऑल्सो इज नॉट up to the mark from ChatGPT point of हाँ. view because it is very, sometimes it talks very in a very colloquial way. इनफॉर्मल का. हाँ, sometimes it talks in a very technical language, sometimes पता नहीं उसका अपना ही मूड होता है. ये बड़ा अच्छा बोला आपने. तो चैट जीपीटी के मूड पे मत जाइए और अपना दिमाग लगाइए. हाँ, राइट. मुझे नहीं आइडिया था कि वो ग्रामर सही से चेक करता है कि नहीं, बट यार थैंक्स फॉर नो लेटिंग मी आल्सो नो. तो भाई चैट जीपीटी पे तो आप रिलाई नहीं कर सकते. हाँ ठीक है, आपको असिस्ट जरूर कर सकता है.
It's So okay for considering that, Facebook. It's okay hmm, for Facebook, Instagram and LinkedIn post. correct. It is not हाँ good. और blog writing और any कुछ ऐसे marketing के लिए content लिख दिया वो हाँ, ठीक है. Not आइडियाज के for, लिए. हाँ, not for writing a article, a research work or so systematic review, meta analysis. मतलब these are high grade works ना, और तो बहुत गाइस, जो भी ये सोच रहा हाथ है के कि साथ भाई दे रहे हैं. चैट जीपीटी आ गया है तो जॉब गई मेडिकल राइटर्स की, ऐसा कुछ भी नहीं है. लाइक ऑलरेडी डॉक्टर अर्पिता मेंशन, भाई इट्स लाइक अ रोबोट ओनली, ये आप समझ लीजिए. उसी हिसाब से वो काम करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर अर्पिता इज कि आई वुड लाइक टू नो एनी एक्सपीरियंस और एनी स्टोरी ऑफ योर्स ड्यूरिंग योर मेडिकल राइटिंग जर्नी, जिसकी वजह से यू रियली फेल्ट दैट कि आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, या वो बहुत ही अच्छा चैलेंज था जिसने बहुत इम्पैक्ट डाला आपकी मेडिकल राइटिंग की जर्नी में. एनी स्टोरी ऑफ योर्स. देखिए, आई टोल्ड यू आई स्टार्टेड 8 to 9 years बैक. तब छोटे छोटे काम मिलते थे. In the beginning I used to do honorary projects only for my seniors or some friends or colleagues and all these people. Okay, just honorary basis because मुझे नेटवर्क बिल्ड करना था. तो धीरे धीरे जैसे मैंने काम शुरू किया एज अ प्रोफेशन एंड देन आई स्टार्टेड मोनेटाइजिंग द वर्क. ओके, एंड देन द नेटवर्क started. I'll share two experiences, one good, one bad. बैड एक्सपीरियंस पहले बताती हूँ. बैड एक्सपीरियंस क्योंकि ये होता है, ये सबके साथ होता है. देयर इज ऑलवेज अ फॉल बैक. There was a project of mine. I had taken up a thesis work for some student. Okay, and thesis का usually it's a big work, right? उसमें बहुत, it's like writing a big project, बहुत बड़ा, it's like a book. 200-250 पन्ने का बुक होता है डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक. उसमें पूरा इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, 100-150 आर्टिकल्स आते हैं, 200 आर्टिकल्स आते हैं और बहुत कुछ, बहुत काम होता है. तो मैंने उस स्टूडेंट का ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा काम कर दिया था. सिर्फ रिजल्ट्स बाकी था और लास्ट का डिस्कशन बाकी था. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड इज ऑब्वियसली इट डिपेंड्स हाउ यू आर टेकिंग द पेमेंट. उस टाइम पे पता नहीं व्हाट हैपेंड. आई डिडंट टेक एनी एडवांस पेमेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स. अरे ओके फाइन, नोन है बंदा, दे देगा, कहाँ भाग रहा है. एंड लिटरली वो भाग गया. आई वॉज लाइक टोटली आउट ऑफ द ब्लू. मैंने इतना काम किया, 3 महीने 4 महीने मैंने पूरे उसमें दे दिए अपने. एंड दैट टाइम इट वॉज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट एज अ थीसिस वर्क. ओके, पहला काम, पहला बड़ा काम. एंड आई वॉज लिटरली होल्डिंग द पिलो एंड क्राइंग. मेरा इतना बड़ा काम, आई लॉस्ट द मनी, आई लॉस्ट माई 3 months ऑफ प्रोजेक्ट. मैंने इसकी वजह से 3 और आर्टिकल्स को ना बोल दिया, काम को ना बोल दिया. आई वॉज लिटरली क्राइंग, होल्डिंग माई हेड बैक. इतना सारा मैंने, फिर मैंने सोचा कि ओके, कोई बात नहीं, मे बी उसकी कोई कमजोरी होगी, मे बी देयर वाज सम प्रॉब्लम इन हिज लाइफ बिकॉज वो भी तो बेचारा स्टूडेंट ही है. कुछ तो हुआ होगा. चलो, उसका काम तो हो गया ना आधा से ज्यादा, बाकी वो कर लेगा शायद. तो आई जस्ट ब्लेस्ड हिम. आई सेड ओके फाइन, चलो कोई नहीं, होता है. सो आई टुक अ ब्रेक फॉर 1 week. आई रीगेन माई दिस थिंग. आई सेड ओके भगवान, हेल्प मी आउट इन माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ऐसा फिर से ना हो. थैंकफुली उसके बाद ऐसा नहीं हुआ. दैट वाज वन ऑफ द बैड एक्सपीरियंस दैट आई हैड. So after this experience, then you started taking payment in advance, or what you did then? No, I always used to take. I always used to take Okay. for any of the project. इस बंदे Okay. का I didn't take because he was known from some of my friends. Hmm. तो मैंने लिया नहीं था और पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने फिर भी नहीं लिया था. बेचारा समझ के हो something. I only picked the gacha. So that was one thing. But then my mother told me that देखो, प्रोफेशन अगर कर रही हो तो बी अ प्रोफेशनल. उसमें कोई अपना पराया नहीं होता है. Even if you are working for your own husband, take money from him because this is your profession. You cannot. अगर घोड़ा घास से ही दोस्ती करेगा, खाएगा क्या? I said, Mama, this time you are right. I said, okay, fine. Next time I won't do it anymore. So that was one of my bad experiences. Of course, छोटे मोटे उसके बाद होते रहते हैं. So एक बंदे ने तो 3 साल लगा दिए मेरे को 2,000 रुपए देने में. तो मैंने बोल दिया छोड़ दो, मैं ही तुमको दे देती हूँ. Oh my तो God. ये होते रहते हैं. And the good experiences was like when I got I mean
3 years back, I got a call from somebody, some senior person, and I mean, she was like a mentor, obviously. She's still like a mentor. So she said that I want you to work for me, and she gave me a bulk project. Okay. Okay, and that was a huge project. Bulk means it came in bulk, 10, 15 projects at one time. So I was really boosted up. I was like, okay, it's coming in such a large amount, and that didn't stop. Touchwood, that is still happening. I am getting that bulk project. So that took a huge leap in my career 3, 4 years back, and it's still going on. So that was a huge thing. And that happened only because she got to hear from one of my friends that I am doing this work. So it's again Okay. your networking, your, I mean, how you build up your trust, how your friends know you. So that is how life goes. But you have to keep still. That is what is there. यस सो या रीजन ये पूछने का स्टोरी पूछने का ये था क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं फ्रॉम वेयर यू नो यू जस्ट चेंज और मे बी Yeah. यू नो यू चेंज योर Yeah, you change from your bad experiences, you change from your good experiences. मैंने change किया करेक्ट from my bad experiences. उसके बाद मैंने कभी ऐसा कोई भी काम नहीं लिया जिसमें I think that it will not give me any return back. Because finally at the end of it, see, we all are working. करेक्ट We cannot say that हाँ मैं ये मतलब एक सब्जी वाला भी मेरे को धनिया फ्री में नहीं देता है, तो मैं इतना बड़ा काम क्यों करूंगी फ्री में? करेक्ट It's always there. So don't be that judgmental about the people are asking money for. It's okay. Everybody has their own right. We are using our knowledge. We are using our एवरीबॉडी education. एवरीबॉडी नीड्स मनी बेसिक तो चाहिए राइट हम लोग कर तो क्यों रहे हैं? कर क्यों रहे हैं वही तो. भाई We have to अभी earn. जो लोग हमें सुन रहे हैं जो लोग हमें सुन रहे हैं वो हमें सुन क्यों रहे हैं Correct. right so you want to make out something from this podcast you want to start your journey maybe you're an aspiring medical writer now Correct. what is the reason not just that this is your passion along with that you need money also right so that's See, how thing works hmm. there is a motto in my life. Hmm. Have you noticed the spelling of learn? Learn. Hmm. If you remove L, there is only earn. So Hmm. my motto is in life is earn to learn and learn to earn. So it's Great. always like that. Okay, if you remove L, you have to earn. If Hmm. you add L, you have to learn. So the more I learn, the more I learn. And the more I Correct. earn, the more I learn. Because that is the motivation which keeps me going. If money Great. does not come in my bank account, I don't do the work tomorrow, na? Great. मतलब ये मैंने आज आपसे सीखा मतलब to earn I have to learn and to Definitely. learn I have to earn Definitely. There right is only a difference of one L in front. hmm. ट्रू ट्रू 100% ट्रू तो कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता कोई भी yes there is a earning and that is definitely a motivation also so with this Dr. Arpita any final tips or words of encouragement for aspiring medical scientific writers Yeah. Aspiring words, I can only give you. See, all of you are experts, maybe experts, or would be experts in your respective fields. Okay. But don't always think that I am over here, because we cannot be at the top at any level. Each and every day we have to learn and we have to grow. Then only we can reach at the top level. Even the highest person in the country or in the world is still learning. correct Where are we? So the only thing I can give you is, if you are choosing this field, you have to keep your mind, you have to keep your brain, you have to keep your eyes, everything open and focused to learn every day. Because you read projects, you read articles, you have to get the knowledge, acquire that topic, you have to comprehend that, you have to understand that, then only you can reproduce it. And please be patient, because patience will definitely pay you. It's a very big paycheck. Patience is a very big paycheck. If you have that patience, you will not, I mean, lay back at any time. See, I told you, I'm repeating again that 8 years was not the same for me.
First 3 4 years was just only how much is 1,000 2,000 rupees. 1,000 का तो हम लोग सब्जी खरीद लेते हैं आजकल. How much is Correct. that? So from that, for I mean 1,000 to reaching a 5 figure 6 figure salary, and I mean income at that point, this point of time, is a huge leap. But I was there. I didn't return back, and I didn't stop. Mm. So be persistent, be consistent if you really want to grow in this field. And थोड़ा बहुत tiring है definitely, थोड़ा बहुत boring भी लगेगा. Read something else, listen to music, entertain yourself, detach yourself from the Have digital some world hobby and other than your work. Please have some hobby, have all some of you, hobbies. Yeah, for everybody. everyone. Yes. I get tired. My best energy booster is my daughter. I just Mm. go and I just do a little bit musty, hit her out, she'll hit me, run around, play badminton with her, or do some art and craft work or something like that. Because, see, kids will teach you a lot. Correct. Okay, yesterday only she told me, Mama, you're working too much. You have to take care of your health. I said, okay, that's a good point. I take that. So be that much. I mean, you have to be flexible. Everything you do. Don't just die for this thing, because you have to you have your life, right? Live that. Correct. But yes, be consistent, be upfront, and learn. If you get some guidance from somebody, take that, because that is very important. So you will definitely go if you're coming to this field. Yes. So thank you, Dr. Arpita, for this all suggestions, all your learnings which you shared with us. And yes, for me, my takeaway from this is learn to earn and earn to learn. So really, I'm going to take this with me today from this podcast. Also, for our audience, let me tell you that हमारे पास एक प्रोग्राम है साइंटिफिक राइटिंग का. We have like entire medical writing का. So if somebody of you is interested to learn scientific medical writing, then you can comment SMW, scientific medical writing, that is SMW. Please comment in the comment box and we'll share the details with you. And also, like I shared my learning from what I learned from Dr. Arpita, what is your learning from this podcast? Please do comment इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज ये सारे कमेंट्स देख के हमें भी मोटिवेशन मिलती है और भी Yeah. चीजें आपसे शेयर करने का. सो इट्स ऐसे ही और भी पॉडकास्ट के साथ हम आते रहेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट साइंटिफिक मेडिकल राइटिंग, एंड वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर अर्पिता फॉर कमिंग हियर, गिविंग यू सच अ वैल्यूबल insights, and very important is giving your precious time here. Thank you so much, Dr. Nima. It is always a pleasure talking to you, and it was my pleasure coming to your podcast. Thank you so much, and all the best to all those who want to become aspiring SMWs. Welcome to the field. You're most welcome. We all there to guide you anytime. थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस. और बहुत ही जल्दी किसी दूसरे टॉपिक पे एक नए पॉडकास्ट के साथ आएंगे. टिल देन हैव अ नाइस डे. बाय बाय.